Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to solve NCERT textbook 1 problems 4.15 and 4.16 based on the oblique projectile motion of class 11 physics chapter 4 motion in a plane in part 20 of this chapter. इस वीडियो में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 1 का प्रॉब्लम्स 4.15 एंड 4.16 का सॉल्यूशन किया जाएगा. प्रॉब्लम 4.15 इज द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई. व्हाट इज द maximum horizontal distance that a ball is thrown at a speed of 40 meter per second. That is, initial speed of the ball is u is equal to 40 meter per second, and the ball is thrown suppose the ball is thrown making an angle theta with the horizontal, that is with the ground. बॉल को हॉरिजॉन्टल के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से या ग्राउंड के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से ऑब्लिकली हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से थ्रो किया जाता है. एंड PQ, सपोज PQ इज द हाइट ऑफ द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल विच इज कैपिटल H इक्वल टू 25 मीटर. So we have to calculate the maximum horizontal distance, that is horizontal range OB, covered by the ball without hitting the ceiling of the hall. बॉल उस लॉन्ग हॉल के सीलिंग जिसका हाइट ग्राउंड से 25 मीटर है, जिसे यहाँ PQ से रिप्रेजेंट किया गया है. Q से ग्राउंड का पॉइंट P है और उससे P सीलिंग का पोजीशन है. तो ग्राउंड से सीलिंग का हाइट QP इक्वल टू सपोज इट इज H, कैपिटल H इक्वल टू 25 मीटर. तो एक बॉल को ग्राउंड के पॉइंट O से या हॉरिजॉन्टल के पॉइंट O से 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड के साथ थ्रो करने पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट given in the problem. So suppose angle of projection of the ball is theta with the horizontal. So we have to calculate the maximum horizontal distance covered by the ball, that is OB, that is horizontal range of the ball without hitting the ceiling of the hall. बॉल को अर्थ के पॉइंट O से 40 मीटर स्पीड से ऑब्लिकली, दैट इज अर्थ से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो करने के बाद वह बॉल कितना अधिकतम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सपोज OB कवर करेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द, वी हैव टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल. बॉल उस हॉल के सीलिंग को छत के ऊपर से जस्ट ग्रेज करते हुए निकल जाएगी बिना सीलिंग को हिट किए हुए. तो बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल मालूम करना है. तो लेट थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल विच इज ऑल्सो नॉट गिवन. बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं दिया है, तो उसे हमने थीटा सपोज किया है हॉरिजॉन्टल से. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट H equals to U square sin square theta upon 2G. We can eliminate sin square theta इस इक्वेशन से, जो कि मैक्सिमम हाइट का प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन है. किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से, उस हाइट का एक्सप्रेशन है. H equal to U square sin square theta upon 2G. Now eliminating sin square theta because theta is also not given.
So eliminating sin square theta from this equation, we can write sin square theta equals to h multiplied by 2g upon u square. H is given. H is the height of the ceiling of the hall. हॉल के सीलिंग का छत का ऊंचाई है जमीन से, ग्राउंड से 25 मीटर. H is 25 meter multiplied by 2. Small g is 9.8. Acceleration, value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. We can also write it as approximately equal to 10 meter per second square. But when that value, that is g is equal to 10 meter per second square, is given in any problem, we can substitute the value of 10 meter per second square. We can substitute 10 meter per second square for g in that case. Otherwise, if the value of g in a problem is not given, then we can take the value of acceleration due to gravity, g is equal to 9.8 meter per second square. So here we have taken g is equal to 9.8 upon u square. U is the velocity of projection, initial speed of projection, which is 40 meter per second, a long way, suppose in this figure. So u is equal to 40 square. Now it is 50 into 25 into 2, it is 50 multiplied by 9.8 multiplied by 40 square, and 0 is cancelled by this decimal, that is we can write 9.8 as 98 upon 10, and in that case 0 of 50 is cancelled by 0 of 10, so it is now it is 5 into 98 upon 40 square, and we can write 92 as 2 into 49, so sin square theta equals to 5 into 98 upon 40 square, that is 5 multiplied by 98 can be written as 2 into 49 upon 40 square equals to 5 into 2, 10 multiplied by 49 upon 40 square. It is sin square theta. Therefore, sin theta, we can write sin theta as root under 10 into 49 upon root under 40 square. Sorry, upon 40 square. 10 into 49 upon 40 square. A square root of 49 is 7. 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, 40 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 40. सो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, वी कैन राइट हियर 10 multiplied by 10 multiplied by 49 upon 40 square, and we can write it as 7 root 10 upon 40 sin theta. Value of sin square theta is 10 into 49, that is we can also write it as 490 upon 40 square. This is sin square theta. Suppose it is equation number 1. Sin theta is equal to 49 can be written as 10 into 49 upon 40 square, and square root of 49 is 7, so it is 7 root 10 upon square root of 40 square is 40. So sin theta is equal to 7 root 10 upon 40. Suppose it is equation number 2. Now we can write cos square theta equals to root under 1 minus sin square theta, because in the formula of the horizontal range r is equal to u square sin 2 theta upon g, and sin 2 theta can be written as 2 sin theta into cos theta. So we have also calculated the value of cos theta. हमें cos theta का वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल का, जो कि इस प्रॉब्लम में प्रोजेक्टाइल इज बॉल, तो बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करना है कि बॉल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा हॉल के सीलिंग को बिना हिट किए, बिना उसे स्ट्राइक किए हुए, टच किए हुए, सीलिंग के जस्ट ऊपर से ग्रेज कर जाएगा. तो उस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, and we can write since theta is not given, so we can write sin 2 theta as 2 sin theta into cos theta. So sin theta is
obtained here. Sin theta is equal to 7 root 10 upon 40, and so we have also we have to also obtain the value of cos theta. So cos theta is equal to root under 1 minus sin square theta. Value of sin square theta is given 490 upon, we have obtained it, not given in the problem, we have obtained it, 490 upon 40 square in equation 1. So it is root under 1, in place of sin square theta we can write 490 upon 40 square. In the next step we can write it as cos theta. Therefore cos theta equals to root under 1 minus sin square theta, और sin square theta का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया था इक्वेशन 1 में. sin theta is equal to 490 upon 40 square. So putting this value of sin square theta, that is 490 upon 40 square in this formula of cos theta is equal to root under 1 minus sin square theta, and it is root under 1 minus value of sin square theta. We have substituted 490 upon 40 square from equation number 1, and now LCM is 40 square, and we can and 1 into 40 square is 40 square in the numerator, in the first term of numerator, minus 490. So after further simplification, we have cos theta is equal to root under 40 square minus 490 upon 40 square. 40 square is 1600 minus 490 upon 40 square. 1600 minus 490 is equal to 1110. This difference is 1 root under 1600 minus 490 is 11110 upon this is under upon root under 40 square is 40. Square root of 40 square is 40. So cos theta is equal to root under 1110 upon 40. Suppose it is equation number 3. Now we have to apply the final step. We have to use the final step, that is formula of the horizontal range. हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि बॉल कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा हॉल के सीलिंग को बिना हिट किए हुए. जस्ट सीलिंग से जस्ट ग्रेज कर सीलिंग को पार कर दूसरे साइड में चला जाएगा. दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज को भी हमें कैलकुलेट करना है. तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला इज नाउ आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. साइन 2 थीटा वी कैन राइट 2 साइन थीटा into cos theta in place of sin theta upon g. Value of u square is, this is the formula for horizontal range of a projectile. Here projectile is the ball which is thrown at angle theta with the horizontal. We have taken theta is the angle of projection. So r is equal to u square multiplied by sin 2 theta upon g. And sin 2 theta, in place of sin 2 theta we have written 2 sin theta into cos theta. Now put substituting these values, all values are present. That is value of u is, initial speed of projection is 40, so it is u is equal to 40 square multiplied by 2 sin theta is we have obtained sin theta in this equation. Equation number 2, 7 root 10 upon 40. 7 root 10 upon 40 multiplied by cos theta. Cos theta is in equation 3 we have already obtained. Root under 1110. Root under 1110 upon 40. Upon g. G is 9.8. So it is divided by 9.8. Value of g is 40 into 40 in the denominator. Numerator is also 40 square. So it is cancelled out. 9.8 is cancelled out by 2, 4.9.
and 4.9 is cancelled out by 7, that is 0.7. So we have in the numerator we have root under 110 multiplied by root 10. We can write it as root under 110. We can write it as root under 111 multiplied by root 10, and root 10 into root 10 is 10. So it is 11 root under 111 multiplied by 10 into upon 7. So it is 111 multiplied by 10 multiplied by 10, that is the square root of 10 and root 10. Root 10 is present inside the square root, that is root under 110. We can write it as root under 111 multiplied by root 10. So root 10 into root 10 is 10, and it is root under 111 multiplied by 10 upon 0.7. It is 0.7, and we can multiply 10 in the numerator to remove this decimal in the denominator. So it is root under 111 multiplied by 100 upon 7. And the square root of root under 111 is approximately 10.5. So we can write now we can write for R, horizontal range R. Now we will obtain the final result, that is R equals to now R equals to root under 111 multiplied by 100, 10 upon 0.7. We can write it as 100 upon 7. So it is 100 upon 7. A square root of root under 111 is 10, approximately 10.5 multiplied by 100 multiplied by divided by 7. Now it is 10.5 multiplied by 100. It is decimal is neutralized by cancelled by 10 of 100. So it is we can write 10.5 as 105 by 10. So 10 of 100 will cancel out of the denominator 10. That is 0 of the denominator, that is 10. So it is decimal is neutralized by cancel out by 0, neutralized by 0. So we have 105 into 10, that is finally it is 1050 upon 7 meter, and it is 150 meter. Approximately horizontal range of the ball, that is ball can cover maximum distance, and that distance is approximately 150 meter. Exact answer we can obtain 150.5 when the square root of because the square root of root under 111 we have taken 10.5, but it is approximately more than 10.5 and smaller than 10.6. So exact answer of this problem, that is maximum horizontal range or maximum horizontal distance covered by the ball is 150.5 meter. But here the square root of root under 111 we have taken approximately 10.5. The answer is, in this case, it is R is equal to 1050 upon 7 meter, that is 150 मीटर. तो यह वह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वह मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसे बॉल अटेंड कर सकता है, कवर कर सकता है ग्राउंड पर विदाउट टचिंग द या विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल. मतलब ग्राउंड के वो पॉइंट से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो हमने सपोज किया है कि ग्राउंड से या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, थ्रो किया जाता है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 40 मीटर पर सेकेंड. तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को यह मालूम करना था कि बॉल कितना अधिकतम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, वो भी कवर करेगा हॉल के सीलिंग को बिना स्ट्राइक किए हुए बॉल हॉल को पार कर जाएगा.
तो वह हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करना था, तो उस हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने मालूम किया, नियरली 150 मीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ प्रॉब्लम नंबर 4.16 which is on the board also. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? एक क्रिकेटर क्रिकेट का एक बॉल को 100 मीटर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंक सकता है, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स इज गिवन 100 मीटर. तो वह क्रिकेटर उसी बॉल को कितना अधिकतम ग्राउंड से कितना अधिकतम हाइट तक फेंक सकता है, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक थ्रो कर सकता है. क्रिकेटर किसी क्रिकेट बॉल को, एक क्रिकेटर है जो किसी क्रिकेट बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक उस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राउंड के अलोंग बॉल अटेंड करेगा थ्रो करने के बाद 100 मीटर, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल इज 100 मीटर. तो क्रिकेटर किसी क्रिकेट बॉल को 100 मीटर अधिकतम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंक सकता है, थ्रो कर सकता है. तो वह क्रिकेटर उसी बॉल को कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस और कितना मैक्सिमम ग्राउंड के ऊपर कितना अधिकतम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक थ्रो कर सकता है उसी बॉल को, जिस बॉल को उसने 100 मीटर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज तक फेंका है. सो द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल इज R max is twice the maximum height. Therefore, maximum height H max is equal to R max upon 2. So, because the formula of horizontal range R max is U square upon 2G. Because maximum horizontal range is attained when angle of projection is 45 degree. So maximum value of sin 2 theta is 1, sin 2 into 45, that is sin 90 is equal to 1. So maximum horizontal range R max is equal to U square by 2G. And maximum height of the same projectile when it is thrown obliquely, when it is thrown with initial speed u, and for maximum height the body is thrown, body angle of projection should be 90 degree. तो उस सिचुएशन में बॉडी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में तो बॉडी को ऑब्लिकली थ्रो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट के केस में बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना होगा. सो मैक्सिमम हाइट H max is equal to U square upon G, because angle of projection in case of maximum height is 90 degree, and formula of maximum height is H is equal to U square sin square theta upon G. So when theta is equal to 90 degree, sin square 90 degree, that is sin square 90 degree is 1, that is maximum value of sin theta is 1 when theta angle of projection is 90 degree. So maximum height H max is equal to U square upon G. तो बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना होगा जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करना है उस सिचुएशन में. वैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में बॉडी को हम XY प्लेन में थ्रो करते हैं एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, लेकिन मैक्सिमम रेंज के केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री, एंड फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ द सेम प्रोजेक्टाइल, द प्रोजेक्टाइल शुड बी थ्रोन एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री from the horizontal or from at a point of the ground. So H max is equal to V square by 2G. So
it is clear that we can write H max equals to H max equals to H max is half to that of H max is H max is H max is U square by 2g and R max is U square by g. R max is U square by g, U square sin 2 थीटा अपॉन जी. हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो sin 2 थीटा sin 2 into 45 that is sin 90 is equal to 1. So R max is equal to U square by g. It is not U square by 2g, it is U square by g. Sorry for that mistake. So R max is equal to U square by g and the maximum horizontal range of the projectile is U square upon 2g because formula of the maximum height is h is equal to U square sin square theta upon 2g. So for maximum height angle of projection should be theta is equal to 90 degree from the horizontal, from the any point of the horizontal. So sin square 90 is equal to 1. So H max is equal to U square by U square sin 90, sin square 90 upon 2g, sin square 90 is equal to 1. So it is U square upon 2g. So we can write now H max as 1 by 2. H max is U square by 2g and R max is U square by g. So H max, we can write H max as 1 by 2 into U square by g. And 1 by 2, it is now 1 by 2 multiplied by U square by g R max. U square by g क्या है? Maximum range का value है R max. And it is given in the problem. R max is 100 meter. R max is given. R max is U square by g and it is 100 meter in this problem. So in place of so H max is we can write H max is equal to U square by 2g and further we can write H max is equal to 1 by 2 multiplied by U square by g. So it is 1 by 2 and in place of U square by g it is maximum horizontal range and it is given in the problem 100. So it is 1 by 2 into 100 that is 50. That is 50 meter. So maximum horizontal range that is maximum vertical distance above the ground that cricketer can throw the ball will be, that is maximum height attained by the ball above the ground will be 50 meter. So H max is equal to 50 meter. We can solve it directly by the relation H max is equal to 1 by 2 into U square by g, that is R max by 2. So directly we can in short we can solve this problem as H max is equal to R max upon 2. Using this formula we have used here, H max is equal to U square by 2g and U square by g is R max, so it is R max upon 2. So H max is equal to R max upon 2. R max is 100, maximum horizontal range of the ball 100 by 2 that is 50 meter. तो डायरेक्टली हम इस शॉर्टकट फार्मूला स्ट्रिक्ट फार्मूला से H max इक्वल टू R max अपॉन 2 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.